कि बच्चे ये अच्छे हैं ताकि एक और हमारी तकलीफ हम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज साहब ज़बरदस्त यार, आप लोगों ने बड़ा एक ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है ना आपने कंडक्ट किया इसमें, रुए रवाएँ जी, कोई इसमें शक नहीं है। शाकिर साहब ने माशाल्लाह जी अपना आप दिखाया इसमें माशाल्लाह, ज़बरदस्त एक्सीलेंट अरफान, ज़बरदस्त जी एक्सीलेंट। अरफान अस्सलाम वालेकुम, जीत के लिए। हाँ अच्छा, ये सियालकोट है, सियालकोट से सुबह सुबह ठीक हो गए। मेहनत करनी है। क्या नाम है? नाम भी बताएं ना। अच्छा, मेरा नाम भी कामरान है, ठीक है ना। शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है? अच्छा माशाल्लाह आपका जी। अच्छा मैं समझ रहा हूँ गुजरांवाला की। अच्छा तो किसी दवा देना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रेहान। शाबाश, दानियाल बेटा। ये खन्ना साहब को बड़ा पसंद है, कहते हैं मैं चाहता मुझे बड़ा प्रोटोकॉल। हाँ ये इसके अंदर। अच्छा नाच जीते हैं, नाच सुनेंगे। अच्छी सिलेक्ट की है ये वाली ना। अच्छा ये स्मार्ट हो जाएगा। जीतना है इसको, ठीक है ना इसमें। शाबाश, एक ग्रुप फोटो भी ले लेते हैं इनके साथ। 1 मिनट सर, इधर आ जाइए। 1 मिनट सर जी एक ना सानू ही बोले आ फड़ गया वो बड़ी है वो। मार चुके भाई बाबे क्या यार मिनट बाद इसको गोल की पर खिला रहा यार। गेम देखी इन्होंने मरना है क्या? कॉर्नर था। ओ पाउलो मोटा मारा गोल। शाबाश भाई शाबाश।
ओ फाउल हो गई पैर में कद लग रही है ये भी फाउल है एक हाथ नहीं लगा पीले ठंडी बहुत होता है मैं करने में पाता
ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਯਾਰਡ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं तो मैसी ने लोड़ ही नहीं पैंदी खेडण दी
ਸਾਰੇ ਪੋਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ एक सीसा पिलाए दीवार बन गया जान की बातें हार दी दुश्मन के खिलौने नहीं वो तो हाइट है उन्होंने हाल लाने वतन को बचाने वाला बच्चा एहसास हसन था जिसने खुद फना होकर आलम को डुबा दिया शम्मा हर रंग में जलती है मुसलमानों की 1400 साल की तहरीक पर शामिल है रेत पर टनकते बिलाल से अजाने काबा तक हिजरत मदीना से वारिस सौद तक सफरे ताइफ से मारका हुसैन तक और शहादत हजरत हमजा से वहशी और हिंदा की निजात तक शम्मा हर रंग में जलती है जलाने वाला अपने हिस्से की शम्मा जलाने वालों ने अफसानों के अफसाने और मिसालों की मिसालें कर डाली कि शम्मा सफरे खली अज़्मे मसीहा और आईने मोहम्मदी की सूरत हंसी है तो कहीं हुसैन इतने अली इतने तालिब बनकर इसी की आंखों में आंखें डाल कर ललकारती है तारीख में प्यार बनती है तो उन्नत के पान के ऊपर घोड़े दौड़ते हैं महमूद गजनवी बनती है तो फुर्सत में चूक होते हैं बाबर बनी तो एक नई तारीख रकम कर डाली गायब बनी तो अख्यार की आवाज कर डाली अजीज भट्टी बनी तो बीआरबी को अपने लहू से सुन कर डाला लालच जान बनी तो सियासत की गलत बोल चोटियों को अपने कदमों में झुका डाला डॉक्टर उफाव बनी तो कोड को समाप्ति से डाल डाला कि शम्मा कैप्टन अजमत यार बनी सिपाही मकबूल हुसैन बनी बुरहान मुजफ्फर गानी बनी इकबाल बनी ईदी बनी सदा ये गूंजती है नैनवा के रिगजारों में यही देखा गया है बदरो ओहद के खुदारों में सच लिखा गया है तारीख आलम के शुमारों में लहू शामिल रहा है दहर के रंगीन नजारों में
आज हमें दर्द राहत मिल रहा है। आशियानों पर जाग बजाग बिजलियां गिर रही हैं। अब यार की रात पर हमारे मकानों तकदीर को ढेर बना रही है। पूरा कश्मीर के नाला शिवन कट्टे मुसलमान चीख चीख कर किसी मोहम्मद बिन कासिम के शम्मा को पुकार रहे हैं। फलस्तीन किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतजार तो आइए हम मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी और हुसैन महमूद बनकर कुदरत के चेहरे पर ऐसे अनमोल मौके बिखेरे कि तकदीर के फरमा बरदार लौटे की तरह अपना गलत हमारे आखिर में उठो के तोड़ दे सारा गंगा, चलो सीधे टंग गिराए गुरदास जिस्मों के आंगन में मुसर्रतों के चमक गिराए, बढ़ो के रुक जाए सीले जुल्मत, कटो के जंगाने शब्दों पे, लहू लहू में के रोशनी हो, मरो की दादा हयात होते, मरो की दादा हयात होते। शुक्रिया। अफराद के हाथों में है पोशीदा राज़े जिंदगी कहते, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े जिंदगी कहते, मुसलमान से अदी से सौ सौ सासे जिंदगी कहते, खुदाए नबी दिल का दस्ते कुदरत तू सुभान तू है, खुदाए नबी दिल का दस्ते कुदरत तू सुभान तू है, यकीन पैदा कर गाफिल मखलूबे तुमा तू है, परे है चर्च नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, करे है चर्च नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी करते राहों वो कारवां है। सदर शिवकार मोअज़्ज़िज़ सादत और तालिब साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई का मौका मिला उसका उन्वान है शम्मा हर रंग में जलती है सहर देकर। सदर शिवकार ये उन्वान उन लोगों, नौजवानों और अक़वाम के लिए उम्मीद की किरण है जो तनसानी काफी गफलत और बुज़दिली का शिकार हो गई हैं और इनकी तमाम उमंग और अज़मत का सवाल पसीर हो चुका है और वो इंतहाई मायूसी और बेबसी के आलम में सिर्फ और सिर्फ तबाही की मुंतज़िर हो। ऐसी ही निकम्मी, निखट्टू और मुर्दा दिल अक़वाम को झंझोड़ने के लिए शायर मशीद ने क्या खूब कहा है, वो कौम नहीं लायके हंगामाए पर्दा, वो कौम नहीं लायके हंगामाए पर्दा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज नहीं है। सदर शिवकार जरा गौर करें तो ये मिसरा हम सब लोगों के लिए एक तरह की हैसियत रखता है जो बेबस, बेज़मीर और बेदिल हो चुके हैं और माशरती, समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और दीगर मुल्की मसाइल के हल के लिए खुद को किसी काबिल नहीं कर जानते और मुसलसल मायूसी का शिकार है। जनाबे वाला तेरे पैस मिस्र को मद्देनजर रखते हुए हमें नौजवानों को इनकलाब और आला तब्दीली के लिए आला इक़दार, हौसले और सच्चे जज्बे से लबरेज करना है ताकि वो कौम की डगमगाती नाव को साहिल पर ले आए, किसी तूफान को खातिर में ना लाए, उम्मीद की शम्मा जलाए रखे। बकौल शायर, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मोतियों से वो घबराया नहीं करते। सदर से वकार जरा गौर करें, क्या हम मजल से ऐसे ही थे जैसे आज नजर आते हैं? क्या हमारे आबाद दादार भी कभी मजल आसान खुदगार से नहीं सर मायूस थे? जी नहीं जनाबे वाला, ऐसा सोचना और कहना तो उनकी सरासर तौहीन होगी। वो तो आला फैजान, आला किरदार, शुजाओ, बहादुर और आला रवायात के हामिल थे, मुश्किलात का मुकाबला करने वाले थे और एक जमाना उनके आगे सर निगू था। बकौल इकबाल, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। सदर शिवकार मैं आज के नौजवानों से ये सवाल करती हूँ कि इनके अंदर वो सिफ़ात, वो जज्बात, वो लगन, वो तड़प, बहुत जला, बहुत तूफान क्यों नहीं जो हमारे आबाद दादात का तुर्रा इम्तियाज था, उनका ओढ़ना बिछाना था? क्या इन्हें याद नहीं कि हमारे आबाद दादात ने ये खिस्सा हासिल करने के लिए कितनी मुश्किलात दी, कितनी कुर्बानियाँ दी, किस कदर कैदोबंद की मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन इनके पाए इस्तक़लाल में जरा बराबर लफ्ज़ ही नहीं आई। उन्होंने उम्मीद का दामन थामे रखा, उम्मीद की शम्मा को बुझने न दिया और बिलाखिर कामयाबी की सहर देखी। सदर शिवकार ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि एक कौम जब अपने अंदर उम्मीद की शम्मा रोशन कर लेती है फिर वो बेरूनी तूफानों को खातिर में नहीं लाती, ना ही अपनी मंजिल और मकसद से गाफिल होती है और बिलाखिर कामयाबी की सहर को पा लेती है। बकौल इकबाल, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरफेस है साकी। सदर से वकार दुश्मन हमारी कौम को नीचा दिखाने और परेशानियों में मुब्तला करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। हमारे लिए हर आन हर लहजा नई मुश्किलात, नए इम्तिहानात पैदा करता
लिहाजा उम्मीद का दामन हाथ में थामे रखना है और सहर के उजाले तक हमें कोशिश जारी रखनी है। आखिर में अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार पर करूंगी कि यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म है करब से शरब होने तक, गमे हस्ती का असद किसने हो दुज़मर्गे इलाज, गमे हस्ती का असद किसने हो दुज़मर्गे इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, शम्मा हर रंग में जलती है सहर। FG Public School CAD Kirana Sargoda, FG Public School Chuck 87 NB Sargoda, FG Public Middle School Chuck 78 NB Sargoda. The topic of the competition is beggars can't be choosers. Every participant will have to follow the following instructions. Participants should be in proper school uniform. School badge is not allowed. Paper reading is not allowed. Every participant will have to complete speech in 3 to 5 minutes. We will have allotted numbers to the name of all participants according to alphabetical order. The judges invited for this competition are respected Professor Sajid Nadeem from Concordia College, Gujranwala, respected Ms. Zulaiha Shahnawaz from Concordia College, Gujranwala, respected Professor Atif Ali from Educational Hub College, Gujranwala. Respected Professor Atif Ali will perform the duties of Chief Judge. Now, I humbly request to the Honorable Judges to take their respective seats. Thanks. First of all, I invite allotted number 1 to express his views about the topic. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, who is the sustainer of the whole universe and the master of the day of judgment. Honorable Chief Guest, worthy President and respectable audience, Assalamu Alaikum. Today, I have been honored to express my views on the topic, beggars can't be choosers. Yes, it is true that beggars can't be choosers. It is a proverb that goes back at age to the 50s. Beggars can't be choosers expresses the sentiment that one should be grateful for aid, no matter how it is. Here, the word beggars do not refer to those who are mentally, physically, or financially miserable. Rather, it refers to those who, despite being capable of doing everything, do not bother to exploit it and beg for assistance, support, and reward. Inspired from reliance on self, they beg. They do not apply their efforts, skills, and resources, both human and natural, and become dependent upon others to fulfill their interests. Such people cannot be the choosers for anything like boast, reward, and pride. Mr. President, a slave cannot impose his will, as his body and mind are fettered and has no independent entity. Right or wrong, he has to be humble, submissive, or unassuming. In the chronicles of hardship, everything seems to be tough and goes against expectations. Mr. President, Japan has been the victim of world severe earthquakes. The country has suffered a lot, but even then, it never begged for any kind of support in front of other nations and relied on its human and natural resources. And now, Japan is one of the leading economies of the world. In the same way, neither did Brigadier Islamic fall back for the title of Eastern Poet, and nor did Sir Syed Ahmad Khan for that of service. Both employed their persistent efforts, and by dint of their diligent exertion, they were rewarded. Mr. President, beggars are devoid of self-respect. They have to bear the taunts of people, get subjected to the great humiliation, as they don't feel small in extending their word to people. Nations that develop the habit of begging in the form of wording to raise the level of development, find it in the long run to dispense with it for one reason or the other. The poor countries willy-nilly have to accept the developed countries. They can't dare to fight their wishes. The poor countries willy-nilly have to accept the developed countries. Mr. President, if Pakistan wishes to assert its will in the sphere of international relations, it must break the begging wall for all the times to come. Beggary is an evil which robs an individual and a nation of its self-respect. And if we wish to revive our selfhood, we must stop being poor. We must depend upon internal strength. Beggars can't be choosers describes the economic reality of Pakistan. Unfortunately, the pathetic previous leading is Mr.
President. Such a catastrophic failure does not happen overnight. The roots of the dismal performance stem from the bankruptcy of our political system, which is producing brains that cannot compete at a global level. The quality of such brains is evident in a bureaucratic system. Brilliant brains will lead to the excellent decision making. Another crux of the maxim is that it advises people not to elect against those so-called leaders who always adopted the policy of begging for aid and loan to run the country. They just fulfill their own vested benefits and ruin the trade of their citizens by swaying them into the valley of debt. And therefore, such people don't deserve to be chosen again. As a matter of fact, the spirit of self-reliance has much importance. One has to be competent, industrious, and confident enough to work for anything desirable or get over any problem. Mr. President, this applies to both a single being as well as a nation as a whole. Mr. President, what we need is a dedicated leadership which will set the path of self-reliance. Thank you. Now in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, the Honorable Chief Guest of the Day, the worthy President of the Day, respected teachers and all my dear fellows, Assalamu alaikum. I would like to say thank you to give me such an incredible chance to make a speech on the topic that beggars can't be choosers. President, beggars are not the choosers. This proverb deals with the bare reality of life. Beggars depend on the alms of others. They are not in a condition of dictating their terms to the alms giver. In fact, they have to remain contented with the quantity given to them. Whether the alms are in the form of a few token coins or a 10 rupee. A beggar cannot force an alms giver to give him 100 rupee note. The Messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, don't be persistent in begging, but Allah, if one of you asked me for something and I gave it to him unwillingly, then there is no blessing in what I have given him. Mr. President, beggars are devoid of self-respect. They have to bear the taunt of people. They are subjected to great humiliation. They do not feel embarrassed in extending their bow to people. They have to bear silently to put up with them. Therefore, beggars have to sacrifice their self-esteem and dignity. As Maxwell Mott said, low self-esteem is like driving through life with your hands brake on. Mr. President, we can take this proverb in the context of economical and political conditions of our country. World's economy. In this regard, there is primary question in international debt crisis, that is why indebted countries fail to meet their debt service obligations. Although it is generally believed that debt helps countries that are suffering from capital deficiency to achieve economic growth. But in fact, this obviously creates a gloomy picture on future growth of the nation, Mr. President. But at the same time, indebted nations are bounded to implement the strategies of IMF or other lenders. They are caught in debt trap out of which they cannot get out. But most importantly, they are kind of enslaved by the creditor developed countries. They have no choice left behind, Mr. President. But unfortunately, indebted nations cannot follow the independent foreign policy to raise their standards economically. Taking everything into account, try not to be like a beggar who doesn't have any choice. Thank you. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Honorable judges, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of my interpretive speech is beggars can't be choosers. This flagrant quotation was highlighted on our news channel, referring to Pakistan being a beggar on the world stage. Although it was not just a slip of tongue, instead it is a subconscious thought engraved in our minds and has been rooted deep in our society on every level, from rich to poor, from businessman to labor, from retired to student, that somehow foreign countries are superior, better, paramount and high rank to us, and we can never compete with them. According to this philosophy, we can't have our own free will, wish, choice and freedom. So the question arises, after 75 years of our independence, do we still have to obey some foreign masters for our survival?
Mr. President, here I would like to remind the saying of our guide Muhammad Ali Jinnah. Come forward as the servants of Islam. Organize the people economically, socially, educationally and politically. And I am sure that you will be a power that will be accepted by everybody. Mr. President, this was my guide ideology. He made a country where we all had freedom, independence and free will. Unfortunately, Mr. President, today we have forgotten the guy's principle and philosophy on which Pakistan was created. Mr. President, Pakistan could not get true leadership after Guy. Nowadays, we have apathetic, self-centered and hypocritical leaders which have put the country's integrity and dignity at stake and bow their heads in front of foreigners. On the other hand, a common man is worshipping personalities. His judgment is blind. Regionalism, class interest, linguistic entanglement and provincialism have made him an incompetent voter. Mr. President, history is replete with examples of nations who said no to begging and rely on their resources to uplift economy. Mr. President, Japan has been the victim of world swell earthquakes. It has suffered a lot. Even then, it can never beg for any kind of support in front of other nations. It relied on its humans and natural resources, and now it is one of the economies of the world. In the same way, neither did the great Allama Muhammad Iqbal beg for the title of the Eastern poet, nor did the Sir Syed Ahmad Khan for the title of Sir. Both implied their persistent efforts, and by dint of their diligent exertions, they were rewarded. It is obligatory for Pakistan to break the begging bowl and make its slogan, trade not aid. Mr. President, as Martin Luther King said, true compassion is more than flinging a coin to a beggar. It's come to see that an edifice which produces beggars needs reconstruction. This is the time to rebuild, renovate, alter, rehabilitate, modify and reconstruct ourselves to show the world that Pakistan is the Shaheed of Allama Iqbal and the sky is the limit for its flight. Mr. President, beggary is an evil which robs our nation of its self-respect. Today, if we wish to revive our selfhood, we must stop taking foreign aid. We must depend on our internal strength. Mr. President, what we need today is the dedicated leadership which could set the nation on the path of self-reliance. Mr. President, I conclude my speech. Beggars can't be choosers. No, Mr. President, no. I'm not a beggar. I will not accept this reality. I am a chooser, and I have chosen to be a mujahid, a ghazi, a martyr, but not a beggar. I can't bow my head before anyone except Allah. Mr. President, at the end, I would leave the stage with this message. Those who bow down to Allah can stand up to everything. Thank you very much. Assalamu alaikum. I am to speak on beggars can't be choosers. Respected President, the proverb beggars can't be choosers means that if you are a beggar, you do not have a choice. It is mostly used in terms of charity, that when a person is getting everything from a donation, he or she must accept what's been given demanding. In other words, if a person is requesting or receiving something for free, they do not need to make a choice or ask for the quality and quantity. Respected President, the axiom beggars are not choosers is a shortcoming, saying that particularly gives advice or shares a universal truth. It presents before our voice the picture of a man who is pitiable to look at. Respected President, a slave cannot impose his will as his body and mind are fettered and he is all helpless. He has no independent entity, and if he displays his goods, he is private once. Right or wrong, he has to be humble, submissive, and unamusing. Respected President, this proverb presents stark reality of life. It brings to listen that a beggar has no choice, owing to his descriptive condition. He lives on the alms of others. The dole may be in form of a coin. A beggar cannot force an alms given to pay him $1 instead of penny. Respected President, although a beggar is subjected to great humiliation, yet he never gives up badly. Thus it is quite said that beggars are not choosers. Respected President, beggars are devoid of self-respect. He does not have a sense of self-respect. He never feels small and thus is shorn of self-esteem. Respected President,
The philosophy of race elaborates various other aspects, where man is compelled and compromised on various things. Willingly, one of them is rapid invasion of culture. Acculturation, mostly in third world countries, is on full swing. The invasion of Western culture has moved ahead. We find its shadow on half of the lifestyles. For example, changing dress code, diluting parental power and strengthening freedom. Exorbitant use of technology and changing ideology of life, all are the ingredients of Western copies. Respected President, this shows saying the political condition of those nations who seek foreign aid. Unfortunately, our beloved country, Pakistan, is one of them. Most prominent aid donor country in Pakistan is America. Respected President, United States has made our political leadership to delegate foreign commands. Besides, we live like strangers in our own country, where a foreigner may have access to justice, but our ordinary man is far behind for the path of justice. Respected President, America, a donor, exploits a ceremony much as it can, and Pakistani politicians shamelessly cannot defy the wishes of their lords. Therefore, it is obligatory for Pakistan to break the begging bowl and make its slogan, "Trade not AIDS." Respected President, if we wish to revive our selfhood, we must stop taking foreign aid. We must depend on our internal strength. What we need is the political leadership which could set the nation on the path of self-reliance. Pages. Beggars cannot be choosers. The exam beggars cannot be choosers presents the stark reality of life, that a beggar has no choice to own his descriptive decisions. He is devoid of self-respect. He cannot force a giver to pay him $1 instead of a penny. Mr. President, he who depends on others deprives from dignity. He does not fight against slavery. He does not raise his voice against cruelty and injustice because he accepts the concept that he is a beggar. He cannot make independent decisions. He has to submit meekly without any protest. A helpless person cannot dictate. Lisa Martuski states that freedom comes from strength and self-reliance. One can scold one servant for his lapse. The servant with the folded hand has to accept the loss of his master because he is at the mercy of his master. Right or wrong, he has to be humble and unassuming. The world belongs to rich and poor has no to say. They have are the masters and they have not are the slaves, the beggars. They have always enjoyed the right to dispatch the fate over them whom they rule. They have no courage to remonstrate with the donors because they are forced to accept whatever is given to them in alms. On the other hand, they are expected to graduate for what they has been given to them. Ferdinand Macron said, "I accept my destiny, whatever it may be, but I will fight for my honor and my dignity." To be a chooser, you have to be influential, powerful and rich. National prosperity is created, not inherited. Dear friends, we have to work day and night for the progress of our beloved country. Let us resolve. We will never let our untreated stone in the way of making Pakistan great and invincible nation in the world. In the words of William Ralph Emerson, not gold, but men can make a people great and strong. He who stands for truth and honor's sake, set fast and suffer longs. Brave men work while others sleep. They dare while others fly. They build the nation pillar deep and lift them to the sky. Thank you very much. Beggars are devoid of self-respect. They have to be at the taunt of people. They are subjected to great humiliation. They don't feel small in extending their powers to people. People call them names and they have to solemnly to put up with them. Beggars thus are shown of dignity. This prevents them from having their choices in life. Their only choice is begging to silently bear the discrimination of people. Once begging is adopted, it goes deep into the psyche of beggars. Even if some beggars are economically well off, they don't like to give up begging. Georgian nations that develop the habit of begging in the form of foreign aid to rise the level of development find it in the long run to dispense with aid for one reason or other. The debt servicing problem rises which consume a large proportion of their budgetary resources. The inflow of foreign loan is offset by the servicing of loans, which debited countries have to repay. Most of the inflow of loan are utilized to pay off the external debt, and only a small percentage of aid is utilized for the financial development projects. The poor developing countries caught in debt trap. Out of it, they cannot get out. Top of all, they are enslaved permanently by the trade development countries. They are forced to toe the line which the developed countries wishes them to follow in the formulation of their domestic policies. They cannot follow the independent foreign policies to promote their interests in global context. The poor countries willingly have to accept the condition of the developed landed countries. To
Mr. President, they cannot yet fulfill their wishes. The poor countries placed under heavy debt thus do not have independent will of their own. They cannot pursue independent policies free of foreign dictation to promote their national interest. And if Pakistan wishes to exert its will in the sphere of international relations, it must break the begging bowl for all time to come. Beggary is an evil which robs an individual or nation of its self-respect. If we wish to revive our selfhood, we must stop taking foreign aid. We must depend on our internal strength. What we need, it is the dedicated leadership which could set the nation on the path of self-reliance. Thanks a lot. और इंतहाई प्यारी और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे सेटिस्फाई हैं और एक जज हमारी आज इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए फैसलाबाद से वो पहुँची हैं उनके भी मशहूर मौजूद है चीज़ें कि वो जा चुके हैं। बेटा कल भी मैंने बात की थी बच्चे आज माशाल्लाह ज़्यादा बच्चे यहाँ बैठे हुए कल मैंने डेटा उन पर बात की तो ये हार जीत ये किसी भी एक कॉन्टेस्ट का हिस्सा हुआ करता है और आपने वो बच्चे जो विक्ट्री स्टैंड पे रहे हैं जिनकी अदा कराइयों से उनको मुबारकबाद। अब कुछ ही लम्हे के बाद हमारे रिस्पेक्टेड आरडी साहब यहाँ पे मौजूद होंगे और उसने जन ये है कि हमारे नए आरडी भी वो ये एक आध दिन में हमारा ये चार्ज दे रहे हैं हमारे रीजन का और शायद वो भी हमारे दरमियान मौजूद हों उनकी दस्ते मुबारक से आपको इनामात चुनने का एक मौका मिल रहा है। तो उस दौरान आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा भी करना है और इंशाअल्लाह सर भी आपको जो है मुबारकबाद भी पेश करेंगे और वो बच्चे जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उनकी यहाँ पे सर मतलब विटनेस भी होना चाह रहे हैं यहाँ पे उनकी तकारीर जो बच्चा फर्स्ट आया हुआ है उसकी स्पीच सर यहाँ पे सुनेंगे और स्पीच भी सुनेंगे किरत भी मिली नगमा भी नात भी तो वो मैक्सिमम तो शायद नहीं हो पाएगा उसके लिए फिर आप लोगों ने जो अगर किरत के लिए नात के लिए तो वो अशार थोड़े से मुतफिक जो आप समझते होंगे वो नात के वो अशार जिसमें आपको ज़्यादा कसरत हासिल है तो वो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। जितने बच्चे भी यहाँ पे आते हैं जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आपने शो करनी है और ये साबित करना है कि आप भी डिजर्व करते हो पहली पोजीशन के लिए। अच्छा इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे मौजूद प्रिंसिपल साहिबान मौजूद हैं मैम बिनारा मुझे नज़र आ रही है मैम सरत शुरू साहबा यहाँ पे मौजूद हैं सियालकोट के बाकी भी हमारे जो 5 इदारे हैं सारे प्रिंसिपल साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी दिल की अदा कराइयों से मैं वेलकम करता हूँ अपने इदारे में और आई होप कि आपने महसूस किया होगा इसमें हमारे इस इवेंट को अरेंजमेंट के हवाले से अपने मैंने कल भी यहाँ पे तज़किरा किया कि हमने इंतहाई म्यारी जजमेंट को जो है रोकार लाने के लिए हमारे जो गुजरांवाला के इंतहाई प्रोफेशनल हमने यहाँ पे जज को यहाँ पे मदद किया है मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर जो नाथ खान है वो प्रोफेशनल नाथ खान को इस दफ़ा हमने मदद किया। कारी हज़रात जो हैं वो अपनी फील्ड के अंदर जो है वो खिताबत के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और मतलब किसी इदारे के अंदर ऐसी भी वो इसमें काम कर रहे हैं प्रोफेशनल मतलब हवाले से मतलब हमने इन चीज़ों को दिखाते रखा क्योंकि अक्सर ये मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि इस किस्म के मुकाबलाजात के अंदर चेहरे पे खुशी उसी को होती है जिसकी पोजीशन होती है और जिसकी पोजीशन नहीं होती उसके बहुत सारे ताक़ुदात होते हैं। ये अल्टीमेटली ऐसा होता है पर यहाँ पे किसी एक बच्चे ने स्टेज पे आना होता है। ये शायद मेरे लिए बात करना तो बहुत आसान है जो जजमेंट के प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं इनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे मतलब जो है क्वालिटी के बच्चों के अंदर ये क्रीम है कि मैं पहले अपने मोहतरम जजेस को भी बता चुका था कि ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे बच्चों ने कम्पीट किया है अब ये रीजनल लेवल पे कम्पीट है और बेटा यहाँ पे बात रुकनी नहीं है। अब जो बच्चे मतलब विक्ट्री स्टैंड के ऊपर है जिनकी पहली पोजीशन है उन्होंने अब जाना है जोनल लेवल के ऊपर तो मज़ा तो यही है कि वहाँ जाके भी आपने अपनी इस जजमेंट को सेकंड करना है कि ना सिर्फ आपने रीजन कम्पीट किया बल्कि अभी आपने जोनल लेवल के ऊपर भी कम्पीट करना है और जिस तरीके से हमारे रिस्पेक्टेड आरडी साहब की ख्वाहिश है कि इस दफ़ा मैक्सिमम ऑल पाकिस्तान की पोजीशन के वो तलबगार हैं तो वो बेटा आपकी एफर्ट के साथ ही चीज़ें को लिए हैं और अगर आप थोड़ी सी अभी माशाल्लाह वो तमाम बच्चे जो कि विक्ट्री स्टैंड पे यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं चंद एक दिन बाकी हैं चंद दिनों के बाद आपने गामजन होना है अपने उन स्टेशन के ऊपर जहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जोनल लेवल पे हो रही हैं अगर आप वहाँ पे कम्पीट करने में कामयाब होते हो तो अल्टीमेटली फिर आपको ऑल पाकिस्तान जाने का मौका मिलेगा जो कि आपके लिए भी एक आनंद का बायस होगा। अभी हमारे कोऑर्डिनेटर ये बता रहे थे कि को करिकुलर हवाले से बात करें
कि आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग का दारोमदार ही जो है वो आपके कॉन्फिडेंस के साथ मैटर करता है। आपकी पर्सनैलिटी में अगर कहीं सुकम रह जाएगा, पढ़ाई में भी सुकम रह जाएगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल मतलब आने का मौका मिला है, तो मैं समझता हूँ मेरी शख्सियत पे बहुत सारी खामियाँ या कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला, जो कि मुझे कई जगह के ऊपर मैं समझता हूँ माविन मददगार इसमें साबित होता है। मैं किसी भी फोरम के ऊपर बात कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें, आप ब्लेस्ड बच्चों में से एक बच्चे हैं कि जिनको आपके स्कूल के अंदर से नॉमिनेट किया और आप यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचे हो, और अगर किसी की पोजीशन नहीं आई है तो दिल बर्दाश्त नहीं होना, इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे अभी 10th में हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं हो रही हैं, उनके लिए वो कॉलेज के लिए अगले साल वो उस फोरम पे जाके अपना लोहा मनवा सकते हैं। और जो स्कूल लेवल के ऊपर जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए एक साल मजीद है, और अगर कोई 8th की बच्चियाँ 7th की बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं तो उनके लिए आगे 3-4 साल मजीद हैं, किरत में, नात में, मिली नगमे में, और मतलब स्पोर्ट्स के अंदर भी वो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। तो बेटा मेरा लेसन आपसे यही है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैक्सिमम लेवल के ऊपर जो है आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। मैं बीइंग अ प्रिंसिपल आपको अपनी ज़ात के हवाले से बताना चाहूँ कि जब मुझे स्कूल लेवल के ऊपर जब हमारे टीचर आया करते थे, जब को करिकुलर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वो जो कहते थे नाम खड़ा करें, हॉकी में कौन हिस्सा ले रहा है, तो सबसे पहले मेरा नाम, मैं हाथ खड़ा करता था। अब मैं अपने हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को ही कोट करना होता है, लेकिन 10 इवेंट में हाथ खड़ा करने के बाद मैं 10 के 10 में बसा रह जाता था। जब ट्रायल दे के आया तो मैं इतना कॉन्फिडेंट तो था नहीं, लेकिन मैंने जाना होता था कि मैं जाऊंगा वहाँ जाके ट्रायल दे के आऊँगा। तो बेटा कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करना है, और किसी न किसी एक आध दफ़ा जब आप रह जाओगे फिर इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर आएगा कि लोग आपके दिन आएंगे। तो आप तमाम बच्चों का दिल के लग रहे से बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दोबारा पेश करूँगा, और वो उनके प्रिंसिपल्स को, उनके टीचर्स को। मैं देख रहा था कि शायद बच्चे कम परेशान थे, उनके साथ अगर हम पाए ज़्यादा परेशान बच्चों को सेपरेट लेके भी वहाँ पे खड़े हुए थे, और प्रिंसिपल भी डेफिनेटली, मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ, मेरी भी एक ख्वाहिश होती है कि हमारे स्कूल के बच्चे वो लीड करें। इसी तरीके से हर स्कूल के प्रिंसिपल को, हर स्कूल के टीचर को, हर बच्चे को, और ख़ासतौर पर उनके पेरेंट्स की भी पीछे दुआएं होती हैं, और ये जज्बा और ये ड्यूटी रहनी चाहिए। यही सेंस ऑफ कंपटीशन होगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह प्रवेश करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आप लोग अपनी नशिस्तों पे बैठे। हमारा ये प्रोग्राम मीडिया पे भी आएगा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से भी लोग इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं। जो हमारे FGEI के मीडिया सेल से ताल्लुक़ रखते हैं नासिर अहमद साहब, वो FGEI की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उन्होंने बड़ी काविशें की हैं हमारे तमाम प्रोग्राम्स को कवर करने के लिए। उनके लिए भरपूर क्लैपिंग करें। ना सिर्फ इस इवेंट को बल्कि तमाम इवेंट को वो कवर करते हैं, उनके हम मशहूर हैं। और प्रिंट मीडिया से हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब रिजवी साहिब और अमजद अली साहिब, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लोग हमारे साथ इस तकरीब को कवर कर रहे हैं, उसमें शेख सलमान साहिब, असद महमूद साहिब और फरहान अहमद साहिब हैं। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट डे है इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो यहाँ पे किरात, नात और मिली नगमा के हवाले से मुकाबला जात जो हैं वो मुनक़द हुए, और ये रीजनल लेवल के थे। और यहाँ पे हमने देखा कि गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट कैंट के और RD मोना, वहाँ से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और सब ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। और यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स थे उनको इस हवाले से प्राइजेस भी दिए गए। और इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इस तरह के जो सरगर्मियाँ हैं वो मुनक़िद होती रहनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहें। मैं एज अ स्पोर्ट्स इंचार्ज गुजरांवाला रीजन
तमाम तर गेम्स का इंचार्ज, और हम लोग इससे पहले भी जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं 23 ईयर्स से चैम्पियन रह चुके हैं गुजरांवाला रीजन वाले। अभी भी इस साल भी हमने विन किया है, और हम बाहर के कंट्रीज़ में भी टीमों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तमाम लोगों को। ख़ास तौर पे फुटबॉल हमारी जो स्पेशल गेम है, कि पिछले साल जो है दुबई गई थी, वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और दुबई की टीमों के मुकाबला जात हुए थे, उनमें पाकिस्तान ने जो है ना वो विन किया था। अस्सलाम वालेकुम, नासिर अहमद, मैं मीडिया सेल FGI को देख रहा हूँ, और ये जो इवेंट्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं इसमें स्पोर्ट्स थी। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास 6 गेम्स थी, जिनमें 6 गेम्स में सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूँ तो हम इस वक्त जिस एरिना पे खड़े हुए हैं वो हमारे पास है बास्केटबॉल का। उसके बाद पीछे आप मेरे देख रहे होंगे हॉकी का एक बड़ा ग्राउंड है, और इसके साथ फुटबॉल और टग ऑफ वार, और उसके साथ साथ एक और जो गेम हमने इस दफ़ा खेली है वो वॉलीबॉल थी, जिसमें बच्चों ने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है, और पोजीशन होल्डर जो बच्चे हैं वो आगे जोनल लेवल पे लाहौर और बाकी शहरों की तरफ मूव करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक भरपूर सरगर्मी थी, जो कि 24, 25 और 26 आज आखिरी दिन था यहाँ पे गुजरांवाला में इन सरगर्मियों का। उसमें हम लोगों ने जिस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिस तरह से कोचेज़ ने पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो वाकई आउटस्टैंडिंग थे। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्नॉलेज करने चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे गुजरांवाला रीजन में FGIs का जो सेटअप है उसने अपना एक लोहा मनवाया है, जो कि पाकिस्तान लेवल पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। बेहद शुक्रिया।